आप सभी का मध्य प्रदेश के पहले ऑटो एक्सपो में भागीदारी एवं इसे सफल बनाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। और ऑटो एक्सपो के समापन समारोह में मंच पर आसीन सभी अतिथिगण एवं उपस्थित अन्य अतिथिगणों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं निवेदन करूँगी श्री संदीप नावलेकर सर का, चेयरमैन CII वेस्टर्न रीजन कमिटी ऑन MSME, कि वे आएँ और अपना कुछ अनुभव शेयर करें हमारे साथ। Good afternoon to everyone. Honorable Industry Minister Shri Rajvardhan Singh Ji Dattigaon, Mr. John Kingsley, MD MPIDC, Mr. Rohan Saxena, ED MPIDC Indore. CII is proud and privileged to be associated as a partner for executing the inaugural edition of MP Auto Show 2022. Well, we had a very short time to execute this show, in fact less than a month, and we could do it. So we would like to thank the Honorable Minister, Mr. Kingsley, Mr. Saxena, for giving all the cooperation and support, and without which it was not possible to pull a show of this grand nature. In fact, this show has become a stepping stone for many more large exhibitions to come to Indore. And we look forward, sir, to have a permanent structure over here so that we can hold a lot of big shows which have been happening in places like Bangalore, Delhi. And as we've been talking since morning that MP has a very ideal location. We are situated right in the central. So it becomes a very convenient place to have and host such kind of big shows. Over the past 2.5 days, a lot of B2B meetings happen and one-on-one meeting happen, and I'm sure a lot of business must have taken place over here. I could get a chance to visit a lot of stalls over here, and I've been traveling all across the world visiting exhibitions, and I must say that this exhibition is second to none. It's absolutely world class, and I must congratulate the entire team for executing this. So I must congratulate once again for pulling up this grand show, sir, and thank you very much for all the exhibitors and participants. We all participate with a lot of zeal. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सर, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा ऑटो एक्सपो अगले साल और भी अच्छा हो। और इसी के साथ मैं श्री जॉन किंग्सले MD MPIDC को आमंत्रित करना चाहूँगी। सर, आप आएँ और हमारे अतिथिगणों को संबोधित करें। सर, Honorable Minister, distinguished guest in the dais, industry participants, and my dear colleagues. It's a great honor and proud. In short time, you could bring so many industries to showcase what Madhya Pradesh can offer, and also to show our strength not only to the country but to the world. I am extremely thankful, and also to the team, my team from MPIDC, partners, CII and ENY and others, those who are wholeheartedly part of it to pull this show. And also I must acknowledge
the industries, cooperation and also the local industries, and especially the topics we had and all on emerging technologies and how we can, as a state, can pull in new technologies and also to bring new emerging technologies to manufacture in Madhya Pradesh and offer a marketplace in Madhya Pradesh. We also had huge discussion on how our young brains can bring in change. As you all know, the necessity brings in innovation, which our educational institutions' participation can bring in different technologies for the need and to grow economically and also as a knowledge-based economy. So, in this occasion, I must thank everyone to bring in, it's a cooperative effort of everyone, especially all the participants, all the team from different parts, because not only the team from us, CIA and others, even our other partners, those who put this show great. So it will improve not only the state's stature, and also it will bring in more and more industries towards us. And as you all know, Honorable Chief Minister has announced it will be an annual event. So our effort for future, we have to plan for next year, which has to be a world class. More industries coming, participation, and also Honorable Minister for requesting Honorable Chief Minister and making this as an annual event, which will help in showcasing Madhya Pradesh as a great destination, not only for automobile but for manufacturing. Thank you, and great show. Thank you very much, industry and my colleagues and the team. Thank you. थैंक यू सर। और मैं अब माननीय मंत्री जी औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग श्री राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव से निवेदन करना चाहूँगी, सर आएँ और अतिथिगणों को संबोधित करें। Thank you, and congratulations to the whole team. Our MD, Mr. Kinsley, Western Zone Chairman, our ED, Rohan Saxena ji, each and every one who participated in the event. Of course, MPIDC team, our partners, ACMA, SIAM, CI, ENY. All to be thanked and congratulated. Like MD was mentioning, it's been an initial effort. It's the first time we've gone ahead and tried to do this. How far we've come is for you to decide, evaluate, assess, and come back to us with the feedback so we can do better. We can do better. We have to do better. I put forward the request from everybody's behalf that the Chief Minister was here, and he very kindly, graciously, immediately acknowledged it, and he said, yes, we have to do it. This has to go forward, and that's the only way. So, so feeling happy about that, but it's like miles to go before I sleep. I have promises to keep. So all of you have to promise this, that we are going to come back next year with a greater and a better show. And just some takeaways I had asked the department to pick out and let me know. The objective, as we all know, was to facilitate, showcase what we have to the world, not just to the state and the country. Because what we have as a facility for auto testing is phenomenal. I don't know how many of you have actually stepped on that Natrex and gone and seen it. The largest in Asia, one of the best in the world, 5th largest. And I was there after the CM left, and I went and visited the facility, and
Dr. Kurupaya, I wanted to ask him, what is it that we can do more here? Because in one of our review meetings, the Chief Minister said that, what are you people doing? 3,200 acres of land given for the facility. World class. The Japanese were here to assist us to make the entire track. And when I was actually on the track, we had a beautiful car though, and a gentleman called Mr. Merchant was driving me through, and he just left the steering. I looked at him and I looked at the speedometer. He was going at 250 kilometers an hour, and I said, do I want to live or I don't want to live? He said, don't worry, this is the neutral space. I don't have to touch the steering, and the car will not go anywhere. And the car just cruised along at 250 kilometers an hour. Didn't budge any which way. That's the way the track's been decided. It's world class, absolutely. And so, the applause is due. And so, if this is what Madhya Pradesh has, why is the country not looking at us more seriously? Why is the world not looking at us more seriously? It is one of the best in the world. I'm not boasting. Go see it. Get the pros here. Get the people who do the racetracks, get the people who have, like you were saying, you've been world over, and I thank you so much for the endorsement. This is second to none. So when we had all that, it was right, the Chief Minister took the right call, and here we are. So not only that, the EV manufacturing, we have had about 108 companies participate, I think. And I thank all of them. We've had varied groups here, from manufacturers to of smaller auto components, EV manufacturers, even agri and farm equipments have been displayed here. And a lot of people have come in and have had a look. About more than 1,000 industry representatives engaged with us. I thank all of them. I would also like to share the feedback, like I mentioned yesterday. From the stage, please do share with us how did you feel about it, how we can next year do better, and how we can jointly work together for the better future. About 50,000 visitors. That's the footfall we've had. Now that's tremendous by any standard in this scorching heat. What was the temperature on? 42, 43? Yesterday. Our CM even had a heat stroke, and I thank him. Even after he was unwell, he visited the stalls and he was encouraging to the younger students, engineers who were trying to. In fact, they measured yesterday because of the heat of the AC. It was 48 degrees in the morning. Rohan's going to be the temperature man the next time. 48 degrees, that's a hell of a lot. I thought we would Barmer or Rajasthan somewhere. Malwa wasn't that hot, but maybe the auto show made it so hot. So congratulations all over again. That's a good thing. So you need to look at the positive aspect everywhere. The glass half empty, half full. I prefer the half full always, taken it to the rim. So good, encouraging signs. 220 B2B meetings happened here. Now 220 B2B meetings is again a very good, encouraging figure. I think we have to do better next year. I'm sure we will. 15 vehicles of 11 companies launched by the CM himself. I think those companies feel good about it, and I wish all the best to the new products that have been launched. I hope Madhya Pradesh proves fruitful and lucky as a launch, and they have good sales figures. Interestingly, I want to share one more figure with you. In spite of the COVID pandemic that we all went through, it was a world sort of a calamity. The figures that came to us from research of the rural market, you know what boomed? Agri equipments, two-wheeler sales, they all went up. Rural India, Madhya Pradesh at least. You know why? Krishi Kraman Puraskar. Our agriculture is very strong. Like CM mentioned, GDP 19.7%, highest in the country. Now that needs applause for the farmers and everybody, including the industries who contributed to it, in spite of the COVID. So why not Madhya Pradesh? That's the question we ask ourselves, and we ask the investors, and we ask the world. We are here. Our ecosystem is correct for you. Please come. Now, 11 vehicles. Liugong. Anybody from Liugong here? No one. I'm sure you are very happy about it. 11 on the very first day, they sold off the product right there on the display. Now, what better would you want? Rohan, paisa vasool ho gaya unka. So this makes us happy. See,
we can't feel happy alone. You know, we can't be happy if you're not happy. It has to be together. It's a joint effort. It has to be mutually beneficial to all. All the stakeholders have to benefit and go home smiling. So I'm glad that we could do this. The government could do this. Our team could do this. Now, I would also like to mention the bigger companies, the bigger boys who are here, supporters, encouragers, John Deere, of course, Volweischer, Tafe, Lugong, Chase, New Holland, Cummins, Pinnacle, JBM, and obviously all the 108, as I mentioned, all of them, I want to thank from the side of the Chief Minister, from the government of Madhya Pradesh, from our entire team. Please keep coming back to us. Please let's grow together. It was a tremendous experience. We learned. And during the entire event, there were panel discussions that took place, and I'm sure those panel discussions were of great quality, though I wasn't there in all of them. Some of the feedback that I've shared, they covered noteworthy topics like automobile growth in India, its contribution in the growth of the Indian economy overall, future possibilities, of course, green mobility, EV. MSME, we had Mr. Narhari. He's not with us right now, but he interacted with you and he met, I think, people one-to-one as well. He's an enlightened gentleman, and I'm sure he contributed in a good way to the entire objective of the exercise. Post-COVID era, again, I would like to mention and give special thanks to all the speakers who were encouraging here and who participated and enlightened everybody with their views and with the experience and what they left behind. We have promoted MSME sector, startups. As the Chief Minister mentioned himself, he's going to be back in Indore soon enough to launch a new startup policy. Now that should bring smiles to a lot of youngsters, people who are looking forward. I'll tell you another advantage with startups. I know the people who are already there for a long time would feel a little, what is this? But anywhere you go to acquire something new or participate in a tender or want to do something, you'll need a past experience and a whole lot of other documentations. And startups, thanks to Prime Minister Modi, no, we don't ask you for anything. You just have to be good enough to compete with them. So that there are a lot of other things. So this is to give you a level playing field, an opportunity to grow. Come, rub shoulders with the big boys and be successful. Why? Why not? Look them in the eye and say, hey, I can do better. That's the spirit we want to encourage. So that is what is going to be happening with the Chief Minister launching the new policy. I'm sure this will go a long way. And there's nobody who has to fear it. That is the kind of response we get. टाइम कम था और पहला एडिशन था, सो नोबडी न्यू कि क्या करने वाले हैं, किस तरह का एग्जीबिशन होगा, व्हाट वुड बी द एंटायर सेटअप लाइक, कुछ होगा नहीं होगा. सो सबके मन में डाउट था एंड दैट मेड कि वो पार्टिसिपेशन जितना जो अभी रहा, अदरवाइज इट वुड हैव बीन मोर एज वेल. सो आई वुड लाइक टू थैंक CII जिन्होंने लगातार, स्पेशली अनिरुद्ध थे, सुधांशु मेरे साथ में थे एंड खुशबू हैं, उनकी पूरी टीम. आई वुड नॉट बी एबल टू टेक सभी के नाम, बट द एंटायर टीम जिन्होंने डे वन से आज तक लगातार हमारे साथ रहे, एक एक पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया, एग्जीबिशन मैनेज की. और सबसे अच्छा काम अनिरुद्ध ने ये किया कि मैरोफॉर्म को यहाँ पे ले आए. सो आप लोग प्लीज़ खड़े हो जाएं प्लीज़. So that is the team from Meroform, 4 लोग जिन्होंने ये पूरा इवेंट 15 दिन में ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए, और पूरे डोम्स, एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटायर AC, एंटायर डिज़ाइनिंग, एंड वेल डन, रियली वेल डन, अमेजिंग. सो आप लोग मेरे घर पे भी आते थे, रात में हम लोग डिस्कस करते थे किस तरह से डिज़ाइनिंग होगा, क्या होगा, एंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम दे हैव मैनेज्ड अ वेरी गुड शो. थैंक यू. देन आई वुड लाइक टू थैंक E&Y टीम, राइट फ्रॉम शुचि, अपूर्वा, एंड आप दो यहाँ बैठे हैं, एंड योर एंटायर टीम जिन्होंने नेटवर्किंग में हमारा सपोर्ट किया. हर सब कंपनी से हमने अप्रोच किया, सभी को इनवाइट भेजा, उनके किसी तरह फॉलोअप किए, एंड वी डेटा एनालिटिक्स में हमारी मदद की, एंड वी इंश्योर्ड कि वाइडर पार्टिसिपेशन रहे. आई वुड लाइक टू थैंक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, संभाग आयुक्त महोदय, हमारे जो रेगुलर हमारी जो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर हैं,
और वो रेगुलर मुझसे फ़ोन पे बात करते रहे। उन्होंने बोला कि कोई भी यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हो तो प्लीज़ लेट मी नो। आवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो पहले MPIDC या AKBN में ही थे, ही हैड ऑल द आइडिया कि किस तरह से इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। सो ही केप्ट गाइडिंग अस कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखो, किस तरह से आगे बढ़ो। आई वुड लाइक टू थैंक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि ये जो प्लॉट था, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से ये प्लॉट ढूंढा था कि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, बड़ी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करना है तो किस तरह से की जाए। क्योंकि जो नॉर्मल यहाँ पे एरियाज़ हैं जहाँ पे दीज काइंड ऑफ इवेंट्स वर हेल्ड प्रीवियसली, उनके पास इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है जहाँ पे हम ये होस्ट कर सकें इतना बड़ा ऑटो एक्सपो टाइप का इवेंट। सो वी माई टीम, जैन साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स सब हैं, दे केप्ट सर्चिंग फॉर द लैंड एंड देन वी ज़ीरोड ऑन दिस। और जब हमको यहाँ पसंद आया तो देन पता चला कि ये मेट्रो कॉरपोरेशन को अलॉटेड है ऑलरेडी ये लैंड। तो फिर एक और कॉम्प्लिकेशन आया एंड बड़ी मुश्किल से देन वी वर एबल टू आइडेंटिफाई दिस लैंड। IDA की लैंड है जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। CO IDA का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1 मिनट में येस किया कि हाँ आप कर सकते हो इवेंट। एंड देन देयर वाज ए चैलेंज कि बहुत ज़्यादा अंडुलेशंस थे इस लैंड पे, बहुत सारे झाड़ लगे हुए थे। करीब 1,500 डंपर यहाँ पे CND वेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था। सो इन ए स्पैन ऑफ 1 वीक हमको ये पूरा हटाना था। मेरी पूरी टीम, जो टेक्निकल टीम है, वो यहाँ पे दिन रात खड़े रहे। इवन उनमें से कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, बट दे कंटिन्यूड। सो एंड देन द टीम ऑफ एंटायर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हमने बुलाया, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज सिर्फ IMC के पास होते हैं। एंड दे इंश्योर्ड कि ये पूरी लेवल हो जाए, यहाँ पे प्रॉपर रोलिंग हो जाए एंड इट इज़ टू द स्टैंडर्ड जहाँ पे हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकें। सो उसके अलावा जो हमारी पूरी टीम है MPIDC की, जो भोपाल से आए हैं, जो बोलूँगा, और मेरी पूरी टीम जो RO इंदौर की टीम है, जिसमें राइट फ्रॉम द इंफ्रा सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन और बाकी सभी लोग जिन्होंने इसमें मेरे साथ काम किया। डे एंड नाइट वी वर वर्किंग एंड ऑफिस का ऑलमोस्ट हमने पूरा ऑफिस का सारा काम बंद कर दिया था। सुबह से रात तक बस यही मीटिंग्स चलती थी, कितने कन्फर्मेशन आए, कितने कन्वर्ट हुए, एग्जीबिशन में कौन कौन आ रहा है, क्या डिस्प्ले हो रहा है। राइट फ्रॉम माय चीफ जनरल मैनेजर्स अरोरा जी एंड भवर जी, माय मैनेजर्स, द एंटायर टीम ऑफ मैनेजर्स, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, दिन रात सिंसियरली काम किया। थैंक यू फॉर ऑल दिस। एंड दिस वॉज जस्ट द सेमीफाइनल। आपको पता है फाइनल है जनवरी में। सो एक रिहर्सल है एंड दिस टाइम काम भी बड़ा है, करना भी ज़्यादा है और मैं भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहूँगा इस बार। सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल। देन एक और चैलेंज था कि इतने सारे वी वर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ फुटफॉल्स, तो किस तरह से वील एंश्योर कि लोग आएंगे उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ हम दे सकें। सो वी डिसाइडेड, MD साहब का निर्देश था कि लोकल क्विजीन्स का फूड कोर्ट यहाँ पे होना चाहिए। सो 56 और सराफा यहाँ के जो सबसे फेमस 2 स्ट्रीट मार्केट्स हैं, उसके लिए भी स्टार्टेड। पहले उनमें भी रेजिस्टेंस था कि किस तरह का इवेंट है, क्यों आना है, कैसे आना है। देन जो हमारी नगर निगम की टीम थी संप्रीत जी की, उनके थ्रू मैंने अप्रोच किया। फिर हमारे मैनेजर हैं भवर जी प्लस शशांक, इन लोगों ने हर स्टॉल पे जाके सारी एसोसिएशन से बात की और कई लेवल्स की टॉक्स के बाद दे सेड येस कि हमको यहाँ आएंगे और विल पुट अप द स्टॉल्स। आज सुबह जब मेरी बात थी तो दे वर रियली हैप्पी। दे सेड कि इतना अच्छा हमने नहीं सोचा था, लेकिन द रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग। और लोगों ने भी बहुत तारीफ़ की, जो यहाँ पे फुटफॉल्स जो लोग आए थे उन्होंने भी कहा कि इस तरह के जो फूड कोर्ट है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो आई एम हैप्पी ऑन दैट फ्रंट एज वेल। साथ ही साथ जो म्यूज़िकल बैंड्स ऑर्गेनाइज़ किए थे उसमें अनिरुद्ध जी को मैं थैंक यू बोलूँगा कि हम लोगों ने डिस्कशन के बाद जो 28th इवनिंग और 29th इवनिंग को जो म्यूज़िकल बैंड्स थे तो वो एक अलग फ्लेवर दिया उसने। एंड इस तरह के नॉर्मल इवेंट्स में परफॉर्मेंसेस होते नहीं हैं, ये एक नया ट्रेंड है और इसको हम आगे ले जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी लोकल बैंड्स हैं उसको भी हम लोग ने कोशिश की थी कि वहाँ पे एक बीच में एक सेंटर स्टेज दें
तो ये सारे जो लोकल टैलेंट्स हैं जो अलग अलग छोटे छोटे जगहों पे दे परफॉर्म करते हैं, उनको भी एक स्टेज मिले. सो दे डिड देयर पार्ट एज वेल. उससे भी उनके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा. दे आर नॉट प्रेजेंट हियर. साथ ही साथ मालवा सुपर कार्स को मैं थैंक यू बोलूँगा. उन्होंने जो अपनी कार्स हैं वो डिस्प्ले के लिए हमको यहाँ पे दी, और सुपर कार रैली जो 24 को ऑर्गेनाइज़ की थी उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट करके उस रैली को सक्सेसफुल बनाया. सो थैंक्स फॉर दैट एज वेल. हम लोगों ने लगभग मध्य प्रदेश के सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को अप्रोच किया था कि उनके स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन के लिए भेजें. उसमें हमारे विजयवर्गीय जी और जयश्री, इनको स्पेशली डेडिकेट किया था. आप लोगों ने अलग अलग स्टॉल्स, अलग अलग लगभग 100 कॉलेजेस और ज़्यादा में आप लोग खुद गए और सबको कन्विंस किया कि आपको यहाँ आना है. एंड दैट एंश्योर्ड कि 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनफ्लो इज़ वेरी हाई. सो आई वुड लाइक टू थैंक द वाइस चांसलर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल द कॉलेजेस जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया. एंड बहुत एक अच्छा एक्सपोजर स्टूडेंट्स के लिए भी मिला. आई वुड लाइक टू थैंक IIT, आई वुड लाइक टू थैंक GSITS जिन्होंने इसमें वॉलंटरीली पार्टिसिपेट किया. एंड आई वुड लाइक टू थैंक द सोशल मीडिया टीम एज वेल जिन्होंने इसको साक्षी उसमें देख रही थी. एंड आई यूज्ड टू आस्क हर कितने व्यूज़ आए, कितने ट्वीट्स आए, क्या हुआ. MPIDC से सपना देख रही थी इस चीज़ को. सो आई वॉज प्रेशराइजिंग देम, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि मैक्सिमम रीच हो, सब लोग उसको इसके बारे में जाने. एंड ओवरऑल आप लोगों का जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा रहा. इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. ये वाला इवेंट 2 पार्ट में हुआ था. एक जो मेन इवेंट जहां हम बैठे हैं, और एक सेकेंड इवेंट इसका जो था वो नेटट्रैक्स में था, जैसा माननीय मंत्री जी ने आपको बताया. नेटट्रैक्स का इवेंट वाज ऑल अबाउट सुपर बाइक, सुपर कार्स, उनकी रेसिंग, किस तरह से प्रैक्टिकली किसी भी गाड़ी की टेस्टिंग होती है, कितने तरह के टेस्ट होते हैं, कैसे उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था. हालांकि दिस वाज नॉट द राइट वेदर फॉर देम टू डू ऑल दीज थिंग्स, बट डॉक्टर करुपैया जी की टीम अंडर हिज लीडरशिप दे डिड वंडरफुल वर्क. उन्होंने पूरा हम जैसा चाहते थे उस तरह का एक छोटा सा इवेंट वहाँ पे 3 दिन का इवेंट क्रिएट किया. एंड बहुत लोगों को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा. जैसा कि मंत्री जी ने कहा, आप ज़रूर जाके देखें. एंड इस तरह के इंटरनेशनल ट्रैक्स अगर यहाँ पे हैं तो एक बहुत बड़ा मैग्नेट है फॉर ऑल द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज टू वर्क. सो अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ, जैसे एक आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर नेम, जो सुपर कार्स और सुपर बाइक्स में आनंद ने बहुत अच्छा काम किया. एंड आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दैट. एंड कीप दिस ट्रैक गोइंग, बिकॉज हमको इस तरह के इवेंट्स आगे भी करने हैं. सो वी मस्ट नॉट लूज़. एंड जो भी हमारी कमी रही है उस इवेंट में 24 वाले में, वो भी मैंने आप लोगों को बताई है. और इस इवेंट में जो रहेगी, जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स है, वो भी आपको बताऊंगा. हमको इसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि जो आगे का जो इवेंट बड़ा आ रहा है उसमें spare 3 days of his busy schedule. PS who